Are you also planning to move abroad? Because this is one thing that's on top of everybody's list. So we are here and we're going to answer some of the most asked questions, and hopefully this is something that's helpful for you. This is a new sort of series that we are starting on this channel. We hope to continue with more such episodes, but this is the first one. I'm Himanshi and this is Prateek. Prateek basically owns this channel, but I'm just... Oh, please, there's nothing as such on. I'm just barging on and helping him answer a couple of questions that we get a lot from people who are moving abroad or considering moving abroad. So we hope this would be helpful for you. We have a couple of questions listed with us, but if you have any more, make sure to comment down and ask us those questions. But if you are watching it on the podcast channel, make sure you go onto our YouTube channel, which is Travel with Prateek, and ask us those questions. So हमने क्या किया ना इस वाले वीडियो में स्पेशली वी हैव कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ different things that we can talk about, you know, as a couple who's living abroad, so it's much easier to, you know, put all those points together and then talk about it. So yeah, I think she has given a very good introduction, so let's just quickly start and get into the topic of all the topics that we have decided for today. Yeah. So starting with the first, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है, आई थिंक कोई अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहता है. द फर्स्ट थिंग इज मनी, राइट? Money, the moolah. Moolah, yeah. So firstly, I'll just give you a quick background about us, where we are, what do we do. So we are right now in Bangkok. We live in Thailand. It's been almost a year now. It's a very good opportunity for us to make such videos so that it becomes more interesting for everyone who's watching it, right? सबसे important चीज़ जो है वो है money. You know, if you're moving abroad, how much do you think it is worth taking that step and going abroad and, you know, literally starting from scratch? Because कभी भी आप बाहर जब मूव करते हो तो obviously you don't have like you know such a big background that आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट करते हो ना, सारी चीज़ें आप स्क्रैच से करते हो. So what is your take on that, you know, after living in Thailand, in Bangkok for almost a year? So I feel money definitely is very important, but there are a lot of other things that you need to consider, but we'll talk about that in a little bit. But जब भी आप कंसिडर कर रहे होते हो किसी भी अदर कंट्री में जाने का, मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि क्या आप उसमें मूव कर सकते हो, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे, व्हाट ऑल दैट यू कैन एक्सपीरियंस, यू नो, दैट योर मनी सपोर्ट्स. So I think depending on the country that you're moving on to, make sure you do enough research to understand. So yeah, like I said, जब भी आपको किसी और कंट्री में जा रहे हो, you have to do enough research to understand कि जो आपको पैकेज मिल रहा है क्या आप उस पर सर्वाइव कर पाओगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. तो डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री दैट यू आर मूविंग ऑन टू, तो वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू योर रिसर्च. सो doing your research can be in two parts. One, you can reach out to the connections that you have in that country. Like I think a couple of people reached out to you directly and they asked you a lot of questions. But the other one is that we did. Like we did a lot of organic research. We researched on YouTube, Facebook, LinkedIn. We saw कि लोग क्या jobs कर रहे हैं, what industries are those, and you know, considering उनकी jobs के कैसे lifestyle है उनका. I think the first and very important part is कि आप कहीं भी जा रहे हो रहने के लिए, you need to do your own research, because what happens is कि आप at times you figure out कि यार okay I'm getting X amount of money in my account, but reality में जो लोग वहाँ रह रहे हैं, do you really think कि after paying all your taxes and literally will you be able to live the same lifestyle जब आप अपनी home country में रह रहे हो और आप वहाँ रहोगे तो आप, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो इन्वॉल्व, यू नो, एज अ पार्ट ऑफ योर पैकेज, और बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, यू नो, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. सो उसके लिए आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि YouTube रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. YouTube पे गूगल तो है ही है, नो डाउट. Everything on YouTube. There is everything. We are there on YouTube. We are there on YouTube. Right. And it's a good point that you mentioned taxes, because बहुत सारे लोग taxes को बहुत lightly लेते हैं. They don't research enough कि कितना tax slab है, कितना आप पे कर रहे हो, social security है, other taxes है. तो मनी के साथ साथ while it looks very fancy कि आपको बड़ा पैकेज मिल रहा है, तो make sure you also research about the taxes that you will be paying. Yeah, luckily in Thailand the taxes are not that great, but it's a part of your salary. It's still a lot. Like मतलब कुछ countries ऐसी भी हैं जिसमें taxes नहीं है, but in Thailand you still pay a lot of taxes. Yeah, because ये आपके पूरे cost का एक part है. Yeah. और जब आप रहने लगते हो किसी भी country में, I think वहाँ पे then you figure out, like I said, figure out all the expenses that happens.
घर जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, बिकॉज ये सारे कॉस्ट होते हैं ना, अपने कैलकुलेट करते हो. Yeah. So our only point is when you are actually getting an offer from abroad, if you're planning to move abroad, you really need to think of all these points from that perspective, like Yeah. how you'll be living in your home country. क्योंकि हम होम कंट्री में भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बाहर खाना खाने, रिलेटिव्स के साथ जाते हैं, सम आउटिंग्स, गोइंग ट्रैवलिंग अब्रॉड समवेयर, वो तो आप अपनी होम कंट्री में भी करते हो और यहाँ पे भी करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू मूव अराउंड हेयर, तो आपके ऑफिस में फ्रेंड्स बनेंगे, लोकल फ्रेंड्स बनेंगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल, सो यू ऑब्वियसली गो हैंग आउट विद देम, सारी चीज़ें होंगी. सो आपको वो सारे कॉस्ट भी इंक्लूड करना है. एंड देन शॉपिंग, बिगेस्ट थिंग शॉपिंग. व्हेन यू एक्चुअली गो आउट शॉपिंग, देन यू रियलाइज कि आपकी सैलरी जो आपको ऑफर हो रही है और जो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो, क्या वो मैच करेगी नहीं करेगी. सो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. It's correlated, right? You consider the money, but you don't consider the rest of the things that comes with it. Expenses हैं, taxes हैं, cost of living है, your food, your rental, all of the things you have to research in advance. बहुत सारे लोग क्या होता है, वो खुश होके चले जाते हैं and then they later क्या आप realize खुश हो गए थे? नहीं, I did my research. Yeah, that's something that you need to consider always. Yeah. Because Thailand is still not extremely expensive to live in, but the countries like Canada and US and Europe where a lot of people move, Like, and they still move. Yeah, हमने इतना ट्रैवल किया. लास्ट ईयर हमने ट्रैवल किया. आई थिंक आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 2017. आई थिंक लास्ट ईयर हम यूरोप गए, हमने बहुत सारी चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया. एंड वी रियलाइज्ड कि यार कॉस्ट इज मनी कैन डिफर फॉर डिफरेंट पीपल. हमारे लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्स पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए वो नहीं हो सकते, बट एक एवरेज कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली वी शुड डू अ रिसर्च. लिविंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये सारा. लिविंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, going out, eating, saving some money, obviously that's also very important. Medical, it's a very big thing. Medical insurance is very very important when you move abroad, जब किसी भी country में जाते हो, because in Thailand where we are right now, medical is super duper expensive, बहुत ज़्यादा. तो वो generally आपकी company sponsor करती है. तो I think that's a very good point कि अगर आप किसी भी country move कर रहे हो, तो अगर it's a white collar job, obviously I hope it's a white collar job, एंड आप मूव कर रहे हो उस कंट्री में, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ वो उस चीज़ के ऊपर नेगोशिएट करना है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Another thing, I know we are stretching this money topic quite a lot, but this is, I think, the most important one. I know we have stretched this money topic quite a lot, but I think it's very important because there's another thing that you have to consider is कैसी life चाहिए आपको. So for us, because we are from India and we have grown like eating Indian food, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग इंडियन फूड ही बनाएं. एंड कंसिडरिंग अ कंट्री लाइक थाईलैंड जहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलता है, सो इट डजंट लीव अस विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू हैव वेजिटेरियन मील्स आउटसाइड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू कुक इन अ होम, which automatically makes your life slightly more expensive and difficult to manage because you have to yeah cook because yourself. you have to do it all on yourself. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं यहाँ पे जो बाहर से खाना लेके खा लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस. बट जैसे हम लोगों की है, हमें वेजिटेरियन मील्स चाहिए, इंडियन मील्स चाहिए, तो देन you have to buy it from an Indian store which is mostly export related stuff. तो उसमें आपको of course expensive पड़ेगा and then you have to make it yourself. So all that chaos just adds up. बट अगर आप रह सकते हो कंट्री के हिसाब से, जैसा देश वैसा बेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, then it will be automatically cheaper for you. Yeah, so I think that moves us to our second topic altogether. मनी पे हम आए, उससे पहले हमें ये भी जानना है कि अगर आप बाहर मूव कर रहे हो तो obviously you got an option, you got a job. Yeah. So let's talk about job. Like what is the current scenario let's talk about Thailand overall, but then we'll focus and we'll cover different topics as well, like how you can find jobs, blah blah blah. So I think we can start with first very important topic, how do you get a job abroad? That's been asked so many times. Law personally level पे कितने लोग पूछते हैं, professionally people reach out to us on LinkedIn like how do you get a job abroad? As simple as that. And by job I mean a proper desk job, white collar job. How do you get it? So there are three ways you can get jobs. First is of course LinkedIn. You can reach out to people, you can apply online. The second is to apply on a regional website. जैसे Thailand में they use JobsDB,
अगर आप UK US जाते हो तो they have their own websites. Indeed, So I you think. can Indeed, yeah. Yeah, so many. Yeah. And the third most important, like it's the utmost important, is to make more connections. So if you have enough connections, you would find a job anywhere in the world. That's why I think you need to keep your social presence high, Yeah, yeah. especially on LinkedIn. You know, LinkedIn is really, really good. I mean, it can be a stressful thing for introvert like me, not you. जनरली ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करो तो आपका कनेक्शंस कम होते हैं, यू ओनली हैंग आउट विद अ कपल ऑफ पीपल, तो देन आपका जॉब सिनेरियो में आप उतना रीचेबल नहीं हो पाते हो. सो इफ़ यू वांट जॉब अब्रॉड, मेक श्योर यू मेक इनफ कनेक्शंस, बिकॉज आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे यू डोंट हैव अ सिटीजनशिप, so you need people to, you know, vouch for you, take your reference in order to recommend you at places. And why would they do it if they don't know you, right? So I think, you know, the most important part is to, whenever you reach out to anybody, you have to create your profile, do your research, because at times what we think is, okay, reaching out is important, चलो भैया LinkedIn खोला, ये जॉब मिली, reach out करना, randomly लोगों को पिंग करने लगे, या फिर प्रोफाइल भेजा, hey can you recommend me to this position, and then the person says, okay, which position? You say, like our friend mentioned, you know, you say product manager, and then you see, okay, product manager नहीं हो रहा तो ठीक है, मेरे को you know marketing का कोई SEO का role है, because I can also do that. No, that's not how it works. I think that stands true if you're applying in your own country also. जब आप किसी को रेफरेंस के लिए बोलते हो, make sure you know that person. And even if you don't know them, just make sure you construct you construct a good response, which makes it possible for them to refer you. You can tell them that this is the position, this is the job code, these are my skills, and this is the location that I'm looking for, and then you can ask them to refer you. Yeah, because I think वो उस तरीके से ना एक बहुत actually में you are reaching out to somebody you don't know, so it's a very first time kind of an experience. So obviously first impression is your last impression. So you need to make it work. You really need to do your research and then reach out to people. And trust me, you know, reaching out हमें बहुत लगता है कि नहीं करना चाहिए, blah blah blah, awkward है. It's not awkward. You just need to make sure that आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी प्रोफाइल पे, you know, you're trying to reach out to somebody, make sure that you do your research, because that's super duper important. That's the baseline. Yeah. And how do you think, you know, changing jobs, because that's a very important thing, once you moved abroad, do you think वो opportunity उस level की है in any country? I think let's talk about Thailand, okay? I mean, let's cut it short. Let's talk about Thailand for now, and let's talk about other countries that we have, you know, we know our colleagues are from. We know that Singapore में, Kuala Lumpur में, because when you are in Southeast Asia, ये opportunities आपके पास आती रहती हैं, you know. I got a call from a Malaysian company, so it's a different world altogether. So let's talk about that experience. What do you think? So एक चीज़ जो है, जो जग जाहिर है, is that tech में ज़्यादा jobs है. Oops. So if you are a techie, then there's a job for you everywhere. But if you're from a commerce background or an arts background, so the chances are slightly less for you. I won't say कि jobs नहीं हैं. हैं definitely, but you know, it becomes slightly difficult. I'll cut you here. It's not just that. It's not just that you are from tech background तो आपको job मिल जाएगी. I mean, इतना भी हम वेग नहीं करते. But you need to have specific skill sets for a person to hire you, because आप किसी भी country में जाते हो, job करते हो, especially if you're abroad, they are going to give you work permit. They are going to sponsor your visa for a year. Techies have skills. We also have a skill. I have a job here, so obviously I have certain skill that I got the job, right? So there's a reason why they call them techies, right? उनके जो skill set है वो इतना age नहीं होता है generally. Like coding जो है, the languages change. Let's not get that deep, but let's cut it short उस level पे कि skills, like you said, tech है तो obviously you consider somebody having particular skill set जिसके basis पे they get employed, right? So अगर आपके पास कोई ऐसा specific skill set है, like even if you're a data scientist or into core reporting, which is something that you feel that it's, you know, highly in demand, then आप apply कर सकते हो, आप jobs के लिए reach out कर सकते हो, LinkedIn पे, Thailand में जो चलता है jobs DB, and you know, anywhere that for that matter. Yeah, so skills like being a data scientist and blockchain and AI related jobs, ये तो of course hot jobs है, and they are available everywhere, no matter which country that you move into. तो उसमें तो job आपको मिलेगी,
but the jobs like martech, SEO, इसमें भी jobs हैं. But The experience, you should only have some thing, experience. the only thing that also correlates to our next topic is the language barrier. किसी भी कंट्री में आप जाते हो जिसकी एक रीजनल लैंग्वेज है, so most of the time they expect you to know that language. That's a very good, very important and very Yeah. big point. Yeah. So यहाँ पे because we're in Thailand, they speak Thai language. If you go to Portugal, they speak their own language, and so is with a Portuguese. lot of Yeah. countries. So that way, I think it becomes difficult to find a job in a country where you don't know their local language. Right? Yeah. So if you are moving, let's say planning to move to a country where, like Singapore, they speak English, super good English. Yeah. We plan to move to New Zealand, Australia, England, Yeah. anywhere. I mean, where they speak English. So it's not a big difficulty for you to, find a job or just even mingle around with locals, because that's very important. Yeah. Language is a big thing. So इसको definitely consider करना आप जिस भी country में जा रहे हो. Language जो है वो बहुत time लगता है, and language के साथ ना आपका culture भी आता है. Yeah. Just because I know the language, like I know स्वादी खाप, पपुंग खाप, तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ. वो एक language है. You should know when to say that. आपको socially, you need to gel up with the people around. So उतने level का आपका mindset open होना चाहिए कि when you are actually working somewhere, when you are meeting people, so are you really open to that experience altogether? Yeah. Just because you got a job, so you're just moving around, it's a big life decision. So language, big thing. So You the need to long open and up. yeah, so the long and short is that either you know their language or you're open to know that language. Basically, open to learn that language. But if you don't fall into either of that category, make sure you know like how long you will be in that country. Exactly. Because मतलब initially इतना challenge नहीं होता. Like for us, it was not a challenge initially. Like talking to locals, we were still able to manage, but it becomes sort of a prerequisite for the jobs, right? Yeah. So that is Jobs the only yeah, definitely. So and plus, I think that again brings to the next point, which is let's say आपने language सीखने का भी सोच रहे हो कि if I'm moving to Thailand, I got this offer, I'm moving to Thailand because let's consider कि easy है move करके. बट आप अगर उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप 6 महीने में नहीं सीख सकते हो, साल भर में नहीं सीख सकते हो किसी भी लैंग्वेज को, थोड़ा टाइम लगता है. आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, बट कितने टाइम आपके लिए लैंग्वेज यूजफुल है? ओनली टिल द टाइम यू आर इन थाईलैंड. सो आपको अपना यू नीड टू वे इन योर प्रोज एंड कॉन्स एंड देन थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव. यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपको लॉन्ग टर्म में यूजफुल होगी. Exactly. लाइक एज मच एज आई वांट टू लर्न थाई लैंग्वेज, आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस लेटर ऑन बिकॉज़ इट्स डिफिकल्ट आल्सो. सच बोलो दोस्त, सच बोलो. डिफिकल्ट तो हिंदी भी है, हमने सीखी है बचपन से ना, बचपन से. खैर आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. वो है व्हेन आई सेड सोशली, कल्चरली, हाउ डू यू जेल अप विद पीपल, लाइफस्टाइल कैसा रहता है आपका. सो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, जनरल एक्सपीरियंस है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट. लाइक इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे पॉइंट 2 3 बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. बट ओवरऑल थाईलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग सुबह जल्दी उठते हैं एंड रात को जल्दी सोते हैं. There are exceptions definitely, but most of the people in follow Southeast this Asia, lifestyle. I think Yeah, overall Southeast Asia. So land of the rising sun. Yeah, तो हम लोग जो हैं वो हमेशा UK US शिफ्ट में काम करते आए हैं. And overall also, I don't find myself as a morning person. Like if I wake up at 8 a.m., I would be the grumpiest of all. So you don't want to be near me at 8 a.m. Please, I don't want anybody to be here. ठीक है, मतलब जो भी, I think that's a good point. वो culture difference आ जाता है, when you are in a country where people like to wake up early. Yeah, I really like that and I admire that, but I don't know, it's very difficult. I don't know when I can be that person who wakes up early and sleeps early and eats dinner early. So all of those things are really admirable. I really like it. I think एक funny incident है. तो when we initially moved here, so हम सुबह ऐसे 6 o'clock उठ गए. ओहो आज तो हम 6 बजे उठे. पर्दा हटा के देखते हैं कि यार हम वॉक पे जाएंगे. You just want to feel that early morning vibe. एंड आप जैसे ही पर्दा हटाते हो आपको नज़र आता है सड़क पर ट्रैफिक, लोग खाना बना रहे हैं, तल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है. सो
Here, I think even if you wake up at 5, it's still not too early. लोग तब भी अपने कामों में लगे हुए हैं, कर रहे हैं. So ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है what we have seen from India. Because हमारे यहाँ पे क्या है ना कि laid back culture तो है ही, but I think people don't really start frying food early morning at 5, right? 5 is like 5. It's like early morning for you. There's no early morning here. I mean, we have not seen that part of India, so we can't comment. I'm sure there must be some people. कमेंट करके बताओ यार 5 बजे कहाँ पकौड़े तल रहे होते हैं लोग, मुझे भी बताओ, मेरे को जानना है. नेक्स्ट टाइम मैं खाता नहीं हूँ बट जा सकते हैं. I'm sure they are. But yeah, I think that's one point. Like people are early risers, and it's definitely admirable. Hopefully, I can be one in some years. Yeah. Not now. Yeah, hopefully. But The second point inside that lifestyle is weather. Weather is extremely important, guys. Make sure that you do enough research of the weather before you move to a country. Like हमारे साथ जो हुआ last year, that was very unlikely of Bangkok and Thailand as a whole. But overall, I think research बहुत important है. अगर आप Canada जा रहे हो, तो then वो तो खैर सबको ही पता है यार, कनाडा के बारे बहुत में हम कोई snowfall कमेंट होता नहीं है. करेंगे. हाँ. But you know, to be honest, I've seen people who are really depressed by that snowfall. Honestly, But हम I've बारिश से seen some डिप्रेस हो गए थे people. यार. हम बारिश से हो गए थे लास्ट ईयर तो. But on the other hand, I've seen the people who are really happy. Like they still go out and they're still jolly and they still enjoy the hiking and snowfall. यार वो अपना अपना है. I अपना think it's अपना very perspective है. individualistic. हाँ. You cannot comment, but Yeah. definitely research करना But that जरूरी है. also was the same thing for us, right? When? So Last last year जब Bangkok में बहुत बारिश हुई थी, like it was like 4 months of continuous rain. मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक हुई थी इनफैक्ट. 5 months, close to 5 months. हाँ, last year काफ़ी बारिश हुई थी, like almost 5 months. So some people were just sitting inside their Yeah. homes, and we were the people who were roaming around on our bike. Like हम लोग raincoat पहन के जा रहे थे बाहर, and we were 200 traveling so kilometers much. of trip Yeah, everywhere. and we were traveling so much back and forth. So it's all about your perspective to that thing, but definitely, you know, it becomes a lot easier अगर आप थोड़ा research कर लेते हो उसके बारे में. आई थिंक ये ज़रूरी भी है. इफ़ यू आर मूविंग टू अ कंट्री, यू शुड नो. यहाँ पे यार ठंड तो होती नहीं है. ठंड के चक्कर में हम नॉर्थ थाईलैंड गए, लंपांग गए, पता नहीं इतनी इतनी जगहों पे गए जो आप वीडियोस देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे. मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच दैट. हमें ठंड नहीं मिली. एंड यहाँ पे लोग चियांग माई जाते हैं, चियांग राय जाते हैं ठंड ढूंढने के लिए. वैसे ही आप किसी और कंट्री में मूव करते हो तो वहाँ पे किस टाइप का वेदर है, यू नो. लेट्स से ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक, यू नो, ठंड भी है, गर्मी भी है, बीचेस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं. सो यू लाइक इट. स्पेशली कनाडा भी ऐसा ही है हर जगह. बट थाईलैंड में एक ही टाइप का वेदर है, गर्मी. पूरे साल गर्मी. December 25th, it's hot. Yeah, मतलब and sometime गर्मी है. it's raining. Sometimes it's raining, yeah. That's So ये important है. yeah. उसके बाद हमारा जो मेन है किसी भी कंट्री में मूव करने का, आई थिंक वो एक, इट्स लाइक अ स्टोन ऑन योर हेड. वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज सेफ्टी. व्हाट डू यू वांट टू कमेंट अबाउट सेफ्टी? I think safety is a very underrated topic in India. But the moment we came to Thailand, we realized that it's super safe. Like it was really crazy जिस तरह की safety यहाँ पे है. मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट इट. स्पेशली जैसे अगर आप हमारा केस बहुत डिफरेंट है. वी हैव लिव्ड ऑल अ लाइफ इन इंडिया. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नज़रअंदाज कर देते हो, बिकॉज आप हमेशा से उस चीज़ को देखते आए हो. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया में सेफ्टी को लेके, जो अच्छे भी रहे हैं, बहुत बुरे भी रहे हैं. सो आपका जो नेगेटिव वाला जो साइड है ना, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला साइड जो है वो आप हमेशा से वहाँ रहे हो, तो आप बहुत जगह सुनते हो कि ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, तो आप यू फाइन विद इट. बिकॉज यू नो हर दिन वही चीज़ आ रही है आपकी आंखों के आगे. नेगेटिव की बात करूँ स्पेशली, तो आप यू आर काइंड ऑफ, यू नो, यू साइड लाइन दैट, ठीक है हो रहा है फाइन. बट जब आप यहाँ पे आते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बाइक के ऊपर अपनी हेलमेट, बैग, कितनी बार मैं ड्रोन छोड़ के चला गया हूँ, है ना. फ़ोन मैंने बाइक में छोड़ दिया है और मैं वापस आता हूँ भीड़ मार्केट से लौट के, वो चीज़ वही है. और कभी कभी तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि यार छोड़ दे, ठीक है. मैं इसको बोलता हूँ कितनी बार कि यार ये कह रही है मेरे बाइक के पीछे बॉक्स है. शी इज़ लाइक लॉक इट, व्हाट आर यू डूइंग, लॉक इट. आई सेड ओके, लीव इट. When you come back, you'll find it there, and we have always found it there. Yeah. कभी ऐसा रहा नहीं. खैर वो हर जगह का अपना अपना होता है, कब आपका दिन खराब हो जाए, कब एक झापड़ आ जाए उड़ते हुए, वो आप नहीं कह सकते, बट ठीक है. But overall, it's super safe. Like आपको ज़रूरत नहीं रहेगी अपने घर को भी लॉक करने की या अपने बाइक्स को लॉक करने की, एंड
nobody touches your stuff overall. So वो I And it think, varies yeah. country to country, but definitely do your research on YouTube. It's one of the most important things that you should look for. Yeah, Like अभी definitely. the more that we're hearing कि Canada में hate crime बढ़ गया है and there's a lot of public attacks and things like that. बहुत ही तो वो मतलब सब हाँ, चीज़ें मतलब हर वो जगह सब की चीज़ें पॉजिटिव है, make हर sure जगह you का check. नेगेटिव है Yeah. उस हिसाब से ना. सो कुछ बस द ओनली थिंग दैट यू लाइक टू से इज डू योर रिसर्च. Yeah. थाईलैंड में भी ऐसे होते हैं इंसिडेंट्स बहुत सारे, न्यूजीलैंड तक में होते हैं जो कि सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट है. Yeah. तो आपका अपना रिसर्च जो है वो आप ही का है, वो आप ही को करना है. बट इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली रिसर्च करना, बिकॉज आप एक नई कंट्री में हो, यू डोंट नो पीपल अराउंड यू, सो यू वांट टू बी वेरी सेफ इन दैट मैटर कि कल को गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा होता है, सो यू नो लाइक यू आर अ न्यू पर्सन इन दैट कंट्री. Yeah. सो आप अपने आप को मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर करो, डू योर रिसर्च, दैट्स सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. And it's also correlated to the transportation thing. तो जैसे थाईलैंड एज अ कंट्री जहाँ पे लोग गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं खरीदते और ख़रीद ही नहीं पाते बेसिकली बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक बहुत क्रेजी है. तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ करोगे, या तो ग्रैब यूज़ करोगे विच इज़ लाइक ऊबर हेयर, या फिर आप MRT यूज़ करोगे. तो अभी रिसेंटली आई सॉ न्यूज़ जहाँ पे कनाडा में MRT में बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, लाइक पर्सनल अटैक्स. तो कनाडा में? हाँ, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस कंट्री में मूव हो रहे हो, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना आपके लिए सेफ़ है. सो सेफ्टी कैन बी एनीथिंग. इट्स यार हाँ, inside your इट्स अ home. ह्यूज टॉपिक Yeah. है. मतलब उसके ऊपर तो एक अलग ही सॉरी अलग ही वीडियो बन जाएगी. हाँ, बट सेफ्टी के ऊपर अपना ओवरऑल रिसर्च मेक करना श्योर यू जरूरी सर्च है. फॉर हाँ. इट. हर कंट्री के पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं. आप जिस कंट्री में जा रहे हो, डू योर रिसर्च. तो यार वो एक बहुत बड़ा सुपर डुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट कम्स, अगर इफ़ यू आर मूविंग टू अ कंट्री विथ योर किड्स फैमिली, या तो वो जो है ना एक ऐसा अनसेड और इट्स अ वेरी हिडन कॉस्ट दैट यू डोंट नो क्या होगा, क्योंकि इट्स नॉट हिडन. आई मीन यू डोंट रियली नो, बिकॉज आपको उस जगह पे जाके रिसर्च करनी पड़ती है, स्कूल्स चेक करने पड़ते हैं. I'm just happy that we don't have kids at the moment because it's super costly, guys. मतलब make costly, sure you definitely. consider all the costs before you have your kids. एक्सपेंसेस इस चीज़ के कभी भी कम नहीं होते अनलेस हाँ. कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री में हो Yeah. जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, पीपल आर रियली प्रमोटिंग यू टू स्टार्ट अ फैमिली, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. Yeah. बट अगर आप किसी कंट्री में मूव कर रहे हो या फिर आप इंडिया में ही हो, यार ये कॉस्ट ऐसा है ना, ये आपकी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. You कॉस्ट can't एक get बार away स्टार्ट with होता है, this. एग्जैक्टली एक बार स्टार्ट होता है, देन इट डजंट स्टॉप. Yeah. सो आप किसी कंट्री जा रहे हो, आपका जो एक्सपेंसेस हैं एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, वो आपको कंसिडर करना है, बिकॉज थाईलैंड में ना एजुकेशन इज सुपर डुपर कॉस्टली. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन. इसके बाद जो हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अब्रॉड, जॉब एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क कल्चर डिफरेंस दैट यू हैव सीन वर्किंग हेयर इन थाईलैंड, प्लस जो आपका इंडिया में एक एक्सपीरियंस रहा है. बट let's not compare it directly to India, but what do you think is the actual difference that you have seen working with different set of people, moving here as a expat? What's your take on that? Yeah, to be honest, if I compare the Indian jobs to jobs here, it will be just like comparing apples to oranges because completely same नहीं है. मेरी industry वहाँ पे अलग थी और यहाँ पे अलग है. तो आई वुड नॉट कंपेयर दैट. बट हाँ, एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिला है. लाइक देयर इज़ डेफिनेटली मोर एक्सपोजर. आई वर्क विद पीपल फ्रॉम रशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया. देयर आर सम इंडियंस एज वेल एंड देन देयर आर थाई पीपल. तो देयर आर डिफरेंट स्किल्स, देयर आर डिफरेंट कल्चर्स. सबसे बेसिकली आपको सीखने को बहुत मिलता है. यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. इट्स डेफिनेटली मोर ऑन दी एक्सपोजर. काम तो आप हर जगह करोगी, लाइक वो तो आपको करना ही है भाई, उसी के पैसे मिल रहे हैं. वर्क इज वर्क, सो इट विल बी फन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन यू विल बी लाइक इट्स वर्क. डेफिनेटली. बट एक्सपोजर डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलता है व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कंट्री. तो दैट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरिंग पॉइंट्स फॉर यू टू मूव अब्रॉड. आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ आवर बेनिफिट्स ऑफ मूविंग अब्रॉड एंड सब अच्छी बातें कर ली हमने. But moving abroad also has a lot of negative points to it, a negative side to it. Yeah. And there are some of the depressing points that you face. So what do you think? What was your experience overall? What was something that didn't work for you? So
आई थिंक ये बहुत ही एक अंडररेटेड टॉपिक है टू टॉक अबाउट. सो डेफिनेटली व्हेन यू मूव अब्रॉड बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको पहले तो नहीं कभी रियलाइज़ होते, बट एंड आई हैव एक्चुअली हर्ड लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट. जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों को मैंने रीच आउट किया इनिशियली ड्यूरिंग माई रिसर्च बिफोर आई वॉज मूविंग हेयर, सो आई रीच आउट टू दैम, आई ऑलवेज आस्क देम, एंड सारे पॉजिटिव बातों के बाद वो एंड में एक नेगेटिव बोलते थे, और वो नेगेटिव मुझे तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक मैं खुद यहाँ पे मूव नहीं हुआ. एंड दैट इज़ you actually sometimes question everything, you know, question your existence, like altogether, like you are in a different world, you are Why in a am I different doing country. this? Yeah, why am I doing this, why am I here? Is it, you know, moving abroad you do everything from scratch, sab kuch, you make your friends, you get to know people, and फिर आप जब थक हार गए ऐसे घर पे बैठे होते हो, and then you question yourself, like is it even worth, you know, taking all that pain and then moving here and doing everything on your own. So आप But this is क्रॉस just क्वेश्चन in the करते हो. moment, right? It's on the moment, right? Yeah. It just happens, but it actually happens to everyone. Yeah. It's not just us. Yeah. बहुत लोगों के साथ होता है. And then you feel like you kind of miss your friends back home, because आप अगर डिपेंड करता है, देखो हम लोग एक एज में मूव हुए जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल थे इंडिया में, बट बिकॉज वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो वी डिसाइडेड टू जस्ट मूव. Some people move very early in their career, like hardly 19, 20, and then they move for studies and whatnot. Yeah. तो हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट था. सो यू काइंड ऑफ एंड अप मिसिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू नो, योर सोशल लाइफ ऑल टुगेदर बैक होम. I think for us, we didn't move for the money or anything else. We just moved for I the think for the exposure. experience, yes, correct. Yeah. Experience. Like, what do you Yeah. have to lose? Like, if you spend 1 year outside your country, just working and meeting other people from different communities in different countries, you gain so much perspective, and there's nothing to lose, right? You're still working. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है कि आप जब आप अकेले रहते हो ना किसी कंट्री में, आप सब कुछ स्क्रैच से करते So हो. independent. Yeah. इंडिपेंडेंट आप जीना सीख जाते हो जो आपने कभी हो सकता है फैमिली के साथ रह के. और ये आई थिंक ये सिर्फ बाहर मूव करने का नहीं है. Yeah, आप we अपनी were फैमिली से spoiled. जब, हाँ, बिकॉज अगर आप अपनी फैमिली से अलग होते हो ना फॉर लिटिल वाइल, जब भी वो आप लेट्स से इंडिया में रह के ही आप किसी और स्टेट में जा रहे हो, किसी और सिटी में जा रहे हो काम करने के लिए, आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं जो आप फैमिली में रह के कभी नहीं सीख सकते हो. True. So I think for anybody who's watching it, and if you are planning to move abroad or go to a different state or blah blah blah, I think you should definitely consider it, because ये जो learning है ना, ये learning आपको कभी नहीं मिलेगी. ये जब तक आप अकेले रहते नहीं हो, चीज़ें करते नहीं हो, अपने आप में चीज़ों को फिगर आउट नहीं करते हो, तब तक आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो. So I think overall this was our experience, you know, moving abroad, and we just talked about some very basic topics that we thought we should cover in today's kind of podcast in which we discuss things. So in conclusion, moving abroad is sweet on most days and bittersweet on some days, but it's definitely something that you should try. Yep. And if you have any questions, please feel free to reach out to us. Comment करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको follow us on Instagram. Yep. एंड अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, जानना है, एंड यू वांट अस टू मेक वीडियोस अबाउट इट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You're getting me a coffee now.